lowest point during this entire journey, if you may want to share with us? I mean, the journey is so long. It is grueling, it is frustrating. Like everyone else, I am just a normal child. मतलब मेरे को भी बीटी होती है, मेरी लिंगो भी वही है जो सबकी है. We can have it as formal as you want, but I am just like everyone else. मेरा means नहीं, मेरा जिस दिन means नहीं हुआ पहली बार, मुझे बुरा लगा. पिछले साल I was filled with rage for some time. जब मेरे 140 मेरे को लगा यार, मतलब I had top 20 marks in written, top 20-30 last year. तो मुझे लगा कि यार मतलब मेरे साथ ही 140 होना चाहिए. And after 185, but then one needs to understand. I am someone who's very bullheaded. I am tunnel vision. I just don't see anything else. So if we are playing this squid game, there's no other way. We have to be that laser. At least that works for me. One has to find their own calling. And every day you will find a low moment. The beauty of this exam is it gives you a lot of low moments. उस लेवल के लो मोमेंट्स देता है आपको कि आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो कि लो मोमेंट कुछ नहीं होता. बिकॉज टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वहां आंसर छूट गए. प्रीलिम्स दे रहे हो लगातार 3 बार, आज भी टेस्ट दिया, कल भी दिया, तीनों दिन 78 आए. तो लो मोमेंट्स को ये इतना नॉर्मलाइज कर देता है, इतना प्रेशर आप हो जाते हो कि आप हो जाते हो ठीक है, सब बढ़िया है. तो लो मोमेंट्स के साथ लर्निंग ये है कि उनको भी इंजॉय करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, थोड़ा स्टॉइसिज्म लाओ कि ठीक है चलता है. ज्यादा उसके नीचे बॉक डाउन हो गए ना. एंड द सोल्यूशन टू लो मोमेंट्स इज हैव अ लाइफ आउटसाइड दिस एग्जाम ऑल्सो. थोड़ा दोस्तों के साथ बैठो, गप्पे गुप्पे मारो, जैसे जो करना है करो. पेपर के बाद डिसिप्लिन तरीके से, जैसे मैं रेगुलरली वीकेंड्स पे ब्रेक लेता था. मतलब जितनी डिसिप्लिन से मैं पढ़ाई करता था उतने डिसिप्लिन से ब्रेक लेता था कि अगर संडे है इंजॉय का दिन है तो इंजॉय का दिन है, खेलने का दिन है तो खेलने का दिन है. तो जब आप ऐसे वो करोगे तो आप अपने लो मोमेंट्स को थोड़ा रैशनलाइज कर लोगे और आप थोड़ा स्ट्रेस मैनेज करोगे. तो लो मोमेंट्स आर मल्टीपल, बट सी इट एज अ लर्निंग. मतलब इमीडिएट रिएक्शंस कैन बी हार्श, बट इन द लॉन्ग रन थिंक कि ठीक है, मे बी समथिंग इज रॉन्ग. मतलब मे बी आई फ्लूक द इंटरव्यू टेस्ट. नो, इट इज वेरी रॉन्ग फॉर मी टू सीइंग दैट पीपल हु आर लाइक 30-40 years senior to me and 5 of them sitting with me, and as a 24-year-old I say, I was back only 23 also then, that all of them are not accurate and my assessment of my personality is accurate. That speaks that I have a very rudimentary understanding. 200 years of experience versus 23 years of living. तो मतलब फेलियर को उस कॉन्टेक्स्ट में देखो, लो मोमेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि यार मेंस का आंसर बाकी बेटर लिख रहे होंगे, एंड देन सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. इवेंचुअली वन विल फील ओके. And the support system plays a very important role. Of course, Having of friends, course. family, those who... I've been very lucky. मतलब my parents, my friends, they were always on my beck and call. That is important for this exam. This exam is essentially not a one-man job. We are just the actors performing. It requires inputs of so many people I can't even name. So this is just like if an actor we are seeing as a film star, every success has many fathers. That is just the face of it. This is an entire machinery running behind. Same is with this exam. I was able to work hard, I was able to relax, I was able to be stress-free because my parents were like that. My support, and it is beyond the students, it is for the parents and others to understand also that this exam is not a one-man job. We have to all work together in synergy and synchronization for that goal. तो I was lucky for that. मैं जो मतलब मेरा support system अच्छा था तो मैंने ज़्यादा stress नहीं लिया. And your family and your support system has done a wonderful job. Absolutely, without a doubt, Ekansh. And it's been a very long journey for you, as I've understood, and it's been a grueling journey for like any other aspirant. But I'm really glad that you're out of this now and on your way to Labasna.